मई जून 2023 वेरिएंट 21। आज हम एक पेपर 2 इसका स्टार्ट करेंगे। जाहिर है पेपर 2 का स्ट्रक्चर तो अब हम सबको पता है, क्योंकि पेपर 2 हमने काफी किए हुए हैं। सो पेपर 2 इज ऑफ टोटल 1 hour 30 minutes। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद दिस मई जून 2023। बाकी इसमें हमारे पास पेपर 2 में कितने केसेस होते हैं? 2 केसेस होते हैं। एक दफा स्ट्रक्चर भी रिवाइज हो जाए, अच्छी बात है। So in paper two, you will have 1 hour 30 minutes. In paper two, you will have 2 case studies, and you will have to attempt all of these case studies, basically 2 of them, and then you have to attempt 4 questions in each case. There will be 4 questions in each case, and all 4 will have to be attempted. Then in the case number two, there will be 4 questions, and all 4 will have to be attempted. कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, पूरा एग्जाम करना है। 1.5 घंटे का टाइम है। 1.5 घंटे का मतलब है कि हमारे पास 2 केस स्टडीज करने के लिए 90 मिनट्स हैं। तो हम 90 मिनट्स में अगर 2 केस करना चाहते हैं, प्रॉपरली 2 केसेस, तो हमें 45 मिनट्स अलाउ करना चाहिए है ईच फॉर ईच केस। लाइक आवर माइंड शुड बी वेरी वेल फ्रेम्ड दैट we are going to solve these 2 cases in 90 minutes, and I will allow 45 minutes for case number 1, and I will allow 45 minutes for case number 2. And there are some students जो question paper सामने आने के बाद, there are a lot of students who just read the entire questions, then read the entire questions of second case. It's better to just start right away. It's just better to आप directly, जैसे एग्जाम का टाइम आपका स्टार्ट हो, लेट्स से अगर 2 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे ही एग्जाम का टाइम स्टार्ट हो, यू गाइज डायरेक्टली रीड द नेम ऑफ द फर्स्ट केस। जैसे इसमें क्या आया है? ग्रेट रिसोर्सेज, GR, द बिजनेस इज नोन एज ग्रेट रिसोर्सेज। जैसे एग्जाम स्टार्ट हो, प्लीज डायरेक्टली रीड करना शुरू कर दिया करो। पूरा पेपर गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, पूरा एग्जाम, पूरे सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली, because you have 90 minutes and you have to maximum time you have to allow for each case is 45 minutes. Now you don't have time enough कि आप बार बार क्वेश्चंस रीड करो या। अच्छा, इसमें एक और मसला आता है। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो ऑर्डर चेंज करते हैं। पहले वो डी पार्ट करते हैं, फिर एंड में वो बी पार्ट करते हैं। ऑर्डर चेंज करना अलाउड है, एग्जाम के लिए ऑर्डर चेंज करना अलाउड है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि केस रीड करा और ऑर्डर में सॉल्व किया। ऑर्डर में ए पार्ट 1 रीड किया, ए पार्ट 1 सॉल्व किया, ए पार्ट 2 रीड किया, ए पार्ट 2 सॉल्व किया, बी पार्ट 1 रीड किया, बी पार्ट 1 सॉल्व किया। दैट्स हाउ योर माइंड शुड वर्क। बिकॉज बिकॉज ऑर्डर चेंज करने का फायदा नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर लेट्स से मुश्किल लग रहा है, अगर एग्जाम में तुम अटेम्प्ट कर रहे हो आंसर, और कोई एक आध क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, तो इट्स स्टिल राइट टू जस्ट सॉल्व इट, इवन इफ इट इज मुश्किल, इवन इफ इट इज टफ। बिकॉज मुश्किल क्वेश्चन अगर अभी मुश्किल लग रहा है, तो एंड में भी तो मुश्किल ही लगेगा ना, है ना? ये कि स्क्रीन का आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा जी, सही है। सो पॉइंट नंबर 1, अगेन पेपर 2 की टेक्निक सारी अब बिल्कुल हमारी क्लियर होनी चाहिए। दैट इन पेपर 2 वी विल हैव 2 केस स्टडीज, एंड वी हैव टू अटेम्प्ट बोथ द केस स्टडीज। ईच केस विल बी allowed 45 minutes, and in total each case will be of 30 marks, will be of 30 marks। ठीक है, सही है। अच्छा, केस नंबर 1 रीड कर रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट बार कह रहा हूँ कि एग्जाम से पहले ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इन ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली लिया करो। इन ऑनलाइन क्लासेस में जो जो टेक्निक्स पे हम बात किया करें, जो आंसर राइटिंग के ऊपर हम बात किया करें, या जो भी डिस्कशन लगाया करें, यू हैव टू मेक नोट्स। यू हैव टू नॉट जस्ट be in the online class, you have to actually find out the techniques that you will be learning and you will be actually using in your exam, जो कि कुछ दिनों के बाद है। सही है। तो जब एग्जाम करीब होते हैं ना, तो अब पर्सपेक्टिव ये होता है कि ये ऑनलाइन क्लास में सर ने किस तरह से केस रीड किया, किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच किया। लिखना, लिखवा रहा होता हूँ मैं, ऑब्वियसली मैं आंसर्स लिख रहा होता हूँ, लेकिन जस्ट बेसिक डिक्टेशन टेस्ट की तरह ये क्लासेस अटेंड मत करना। Try to actually find out those techniques in these classes, that how you are going to use those techniques into your actual exam, which is going to take place after in a few days, right? So you have to get those techniques। मेन मेन ये होता है कि अप्रोच कैसे कर रहे हैं।
सर जब किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो वो यार किस तरह से रियल लाइफ प्रैक्टिकल, यू दैट्स हाउ यू नीड टू फाइंड आउट द टेक्निक्स, गेटिंग इट? सो ग्रेट रिसोर्सेज, केस का नाम है ग्रेट रिसोर्सेज। हम है बिजनेस एडवाइजर, ये हमारा बिजनेस क्लाइंट है, और ये अपनी स्टोरी सुना रहा है हमें कि ये क्या बिजनेस करता है, ठीक है? GR is a business partnership that creates educational resources. It sells direct to schools and teachers via its own website. ठीक है भाई, एजुकेशनल रिसोर्सेज ये बनाते हैं और स्कूल्स को सेल करते हैं, टीचर्स को सेल करते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। क्या एजुकेशनल रिसोर्सेज बनाते हैं पता नहीं। संजय, Rukmal and Boris are entrepreneurial teachers who formed the GR partnership. 1 year ago, they identified a gap in the market to supply interactive digital resources. GR's website is subscription only. An online marketing campaign which used penetration pricing attracted 250 subscribers in the first 6 months of operations. The startup costs were financed with a $5,000 bank overdraft, which is GR's only debt. स्टार्टअप उन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट से किया, ये किस तरह का स्ट्रेंज सेटअप है? सही है, 3 पार्टनर्स हैं, और 3 पार्टनर्स जो हैं उसमें संजय, रुकमल एंड बोरिस। एंड डिजिटल रिसोर्सेज का गैप उनको नजर आया। गैप का मतलब पता है, इस तरह का प्रोडक्ट शायद मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, तो इन 3 टीचर्स ने सोचा कि GR पार्टनरशिप बनाते हैं और डिजिटली रिसोर्सेज, जो रोव पेपर्स टाइप एप्लीकेशन है समझो, यूं होगी कोई, और सब्सक्रिप्शन आपको करानी पड़ती है उसमें। एंड इनिशियली दे यूज्ड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब हमें पता है दैट इनिशियली दे चार्ज्ड अ वेरी लो प्राइस, probably to attract new customers, to encourage them to try this application, and the $5,000 was taken the bank overdraft. ठीक है भाई। Reviewers of GR's product in teaching journals are positive, but cash flow is poor. Many customers have taken advantage of a recent sales promotion for 1 month's free membership and posted positive reviews. Unfortunately, few have taken out a regular subscription. ठीक है भाई, फ्री में आ गए थे फ्री में, लेकिन फिर पैसे का टाइम आया तो सबने कटा दिया। As revenue has not increased as much as the entrepreneurs had hoped, they must now consider alternative promotion methods. They have researched possible promotion methods and decided to advertise in an educational newspaper. The newspaper has a readership of 500,000 people. ठीक है भाई। Expert Materials is a large national company that also advertises in the newspaper. EM is GR's closest competitor. हमारा जो मेजर कंपेटिटर है, हम GR हैं, हमारा क्लाइंट जो है, और जो GR का मेजर कंपेटिटर है वो है EM. The EM brand is well known and trusted in the educational resource market. Table 1.1 shows some marketing data. मार्केटिंग डेटा क्या दिया हुआ है फिर हमारे पास? हमारा बिजनेस है जिसका नाम है ग्रेट रिसोर्सेज, और हमारा जो ये कंपेटिटर है जिसका नाम है एक्सपर्ट मटेरियल्स, उसका हमें दिया हुआ है रेवेन्यू। सो बेसिकली वी आर मेकिंग $15,000 ऑफ रेवेन्यू एंड EM इज नाउ मेकिंग $300,000। उफ, ये तो बहुत बड़ा फर्क है साइज में। हम तो भी बिल्कुल बेसिक बच्चे स्टार्टअप हैं, और EM इज अ ह्यूज लार्ज स्केल बिजनेस। Number of customers 300, now they are having 5,000 customers, and annual advertising spending is 7,500 and they are spending 45,000. ठीक है। केस समझ आ गया मेरे ख्याल से? एक दफा केस गो थ्रू कर लो यहाँ तक। I'll just stop for 2-3 minutes. Just read this case once again. एक दफा देख लो ये डेटा। तो ग्रेट रिसोर्सेस का बेसिकली पार्टनरशिप बिजनेस है, एजुकेशनल रिसोर्सेज बनाते हैं। इनिशियली 1 साल पहले इन्होंने ये गैप ढूंढा, बिजनेस सेटअप किया, और हमारा जो मेजर कंपेटिटर है उसका डेटा भी गिवन है। पार्ट A1, आइडेंटिफाई वन बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप। आइडेंटिफाई वन बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप। आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप साइट पे जाते हो, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने जाते हो, एक एंटरप्रेन्योर होता है, अगर वो तुम लोग में से भी कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं,
तो अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप पे जाते हैं तो व्हाट आर द बैरियर्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट एंटरप्रेन्योर्स माइट हैव टू फेस? क्या बैरियर्स हो सकते हैं बताओ? Sourcing capital, lack of experience. Yes, that's a bigger. और बताएं क्या प्रॉब्लम्स होंगे? Initially, there is no customer base, financial challenge, competition for new businesses, lack of confidence. सही है, कॉन्फिडेंस भी हो सकता है. सही है, गुड. और बिजनेस से रिलेटेड बताओ, साइकोलॉजी से नहीं, मतलब लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कस्टमर ट्रस्ट. इतने सारे चैलेंजेस हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं. लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू बी. यू गाइस आर स्टडीइंग बिजनेस, यू मस्ट स्टार्ट योर ओन बिजनेसेस आफ्टर फ्यू इयर्स. इंशाल्लाह छोड़ना नहीं है, सही ना? और A1, वन ऑफ द बैरियर्स, लेकिन वन ऑफ द बैरियर्स, वन ऑफ द बैरियर्स टू one of the barriers to entrepreneurship is the lack of is the one of the barriers to entrepreneurship is the arrangement of finance, is the arrangement of finance due to limited capital for a new business. Is the arrangement of finance due to limited capital for a new business. So this is one of the major barriers to entrepreneurship के पैसा अरेंज करना initially मुश्किल होता है. A part 2 क्या कहता है? Explain the term partnership. Explain the term partnership. 3 marks. क्या रूल आ रहा है माइंड में बताओ भाई? जब हम पेपर 2 का जब A part 2 अटेम्प्ट करेंगे, whenever we attempt this A part 2 of our examination, then what comes into your mind? What rule of thumb comes into your mind? 2 to 3 points नहीं, पॉइंट्स कैसे लिख लोगे? 2-3. 2 to 3 good quality statements. 2 to 3 good quality statements. I have to write 2 to 3 good quality statements about the term. No. There is no need to relate to the case. Yes, you can relate to the case if you want, but you don't need to. It's not mandatory to connect back with the case. You just have to write 2 to 3 good quality points about about this term partnership. These 3 terms or the 2 terms or the 2 statements should be directly related to the book. It can be related to the case, but that's not needed. You just need to write your knowledge here. Okay? So explain the term partnership. क्या लिख सकते हैं बताओ पार्टनरशिप के बारे में? अगर 2 से 3 स्टेटमेंट्स मुझे लिखने हैं तो क्या वो वर्ड्स हैं जो तुम्हारे माइंड में आने चाहिए? क्योंकि एग्जाम में जब पार्टनरशिप समझा रहे होगे या कोई भी वर्ड समझा रहे होगे तो उस टर्म से रिलेटेड कुछ की वर्ड्स होते हैं, जो की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो हमारे माइंड में क्लिक खुद ही करनी चाहिए हैं. क्योंकि जब मैं आंसर लिख रहा हूँगा तो बेसिक इंग्लिश में मैं कोई नहीं समझाऊंगा, मैं उसमें अपने बिजनेस टर्मिनोलॉजीज को यूज करूंगा. सो इफ आई एम राइटिंग अबाउट पार्टनरशिप, देन व्हाट की टर्म्स शुड जस्ट पॉप अप इनटू माय हेड? अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है होता है, बिल्कुल एक ये वर्ड आ जाएगा. यस, नॉट रेकमेंडेड. करना चाहो करो, एक्स्ट्रा है, लेकिन जनरली ना करो तो कोई मसला नहीं. अनलिमिटेड लायबिलिटी का वर्ड हम यूज कर सकते हैं. 2 till 20 पार्टनरशिप
पार्टनर्स का कर सकते हैं, और पार्टनरशिप डीड का एक वर्ड होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट अगर पता हो कि जब कोई पार्टनरशिप आप बिजनेस करते हो तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आप साइन करते हो वो पार्टनरशिप डीड होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है। तो ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट का वर्ड हम यूज कर सकते हैं। नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का वर्ड यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इज नॉट, हो सकता है, सही है। अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, सही है, गुड। सो देयर आर लॉट ऑफ कीवर्ड्स दैट जस्ट कम्स इनटू आवर हेड, सो जस्ट राइट इट डाउन। पार्टनरशिप is one of the legal structures. Partnership is one of the legal structures. Sorry, is one of the unincorporated. Partnership is one of the unincorporated legal structures where a business is startup, where the business startup by two or more individuals. Startup by two or more individuals. The partners would invest the resources. The partners would invest the resources partners would invest the resources collectively, and would be dividing and would be dividing the profits and losses according to their ownership. Partnership deed भी लिख सकते हैं. The terms and conditions. The terms and conditions are generally documented down. Are documented into the partnership deed. Partnership is one of the unincorporated legal structures where a business is started by two or more individuals. The partners would invest their resources collectively and would be dividing the profit loss according to their ownership. The terms and conditions are generally documented into the partnership deed. You don't need to write as it is. You don't need to write the same answer that I'm writing, obviously. जो तुम लोग मेरे साथ लिख रहे हो वो सिर्फ इसलिए लिख रहे हो ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि लिखते कैसे हैं. When you write it next time yourself, then definitely the answer would be different. We are not here to write कि अगली दफा तुम भी बिल्कुल सेम यही वर्ड यूज कर लो, सेम यही वर्ड ले. No, you just need to write it down with me and you need to understand that how we are writing, how am I thinking. So once you understand the approach, अगली दफा तुम लोग भी लिखोगे तो अच्छा ही होगा. और मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बात याद रखना प्लीज, आंसर लिखते हुए ये मत सोचा करो कि तुम बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर लिख दोगे और पता नहीं कुछ आसमानों से चीजें आएंगी और फिर मार्क्स आएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. यू आर नॉट द इन इन एन एग्जामिनेशन. आपको सुपरमैन स्पाइडरमैन बनने नहीं गए हो. इन एन एग्जामिनेशन व्हेन यू आर राइटिंग यू जस्ट कीप इट सिंपल. राइट वट एवर कम्स नेचुरली फ्रॉम विद इन यू रादर देन जस्ट ट्राइंग योर. मतलब बहुत ही ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो इतना अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अच्छा करने के प्रेशर के अंदर ही नहीं कर सकते. सो इट्स नॉट अबाउट राइटिंग द परफेक्ट आंसर्स, इट्स अबाउट गिविंग योर बेस्ट शॉट. एंड जितना ज़ाहिर है पढ़ा होगा, जितना आपने कोर्स रिवाइज किया होगा, जितने प्रैक्टिस पहले की होगी, तो वो वही चीज़ आप आंसर में रिफ्लेक्ट कर रहे होगे. अब बहुत एक्स्ट्रा अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करने जाऊंगा
तो हो सकता है कि वो परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में मैं आंसर इतना हाई क्वालिटी नहीं दे सकूंगा. सो ट्राई टू जस्ट स्लो डाउन एंड देन ट्राई टू गिव द बेस्ट आंसर व्हाट यू आर राइटिंग. बस ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा कि इतना अच्छा पॉइंट लिखूंगा कि एग्जामिनर ही परेशान हो जाए. नो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होते हैं. यू जितना आता होगा उतना ही लिख सकते हो, उससे कोई अच्छा नहीं लिख सकते हो. ठीक है. यू हैव टू जस्ट राइट एंड गिव योर बेस्ट शॉट. दैट्स हाउ इट गोज. एंड ए पार्ट टू के बाद अब हम जाते हैं ए पार्ट, नहीं बी पार्ट वन पे. तो बी पार्ट वन क्या कहता है जरा देखते हैं हम. रेफर टू टेबल 1.1, कैलकुलेट जी आर्स मार्केट शेयर बाय. हाँ इब्राहिम बताता हूँ, ठीक है. रेफर टू टेबल 1.1, कैलकुलेट जी आर्स मार्केट शेयर बाय रेवेन्यू. मार्केट शेयर निकालना है हमें जी आर का. ये तो आसान है. मार्केट शेयर कितना आएगा जी आर का, बताओ. कितना मार्केट शेयर आएगा जी आर का? मार्केट शेयर का क्या मतलब होता है? मार्केट शेयर का मतलब होता है कि जो टोटल मार्केट साइज है उसमें से कितना परसेंटेज आपके बिजनेस का है. सो टोटल जो मार्केट है वो है 500,000. ये टोटल मार्केट साइज है, इसको कहते हैं दिस इज द टोटल मार्केट साइज, द $500,000. जिसमें से ईएम का रेवेन्यू है 300,000 एंड जीआर का रेवेन्यू है $15,000. सो बाकी का जो है, जाहिर है $15,000 जीआर का है, 300 अगर ईएम का है, 315 ये हो गया. और टोटल जो मार्केट का रेवेन्यू है वो है 500. और भी बिजनेसेस होंगे ना, जाहिर है सिर्फ जीआर और ईएम तो नहीं होंगे. देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ अदर बिजनेसेस एज वेल. We have been given data about these two businesses, but there must be a lot of other businesses as well in the market. So if I want to calculate the market share, then basically $15,000 revenue है GR का, और 500,000 जो है वो टोटल मार्केट का रेवेन्यू है. तो जो टोटल मार्केट साइज ऑफ $500,000 में से जीआर का जो परसेंटेज शेयर है वो है 3%. 3%. ठीक है. यानी कि टोटल मार्केट में से 3% शेयर जीआर का है. ईएम का कितना है? व्हाट इज द मार्केट शेयर फॉर ईएम? ईएम का मार्केट शेयर कितना है भाई? देखें, कैलकुलेटर चलाओ, शाबाश. 60% होगा. 300,000 का सेल्स रेवेन्यू है, 500,000 की टोटल मार्केट सेल्स है. So basically 60% of the market share is held by EM, and 3% of we are having 3% market share and EM is having 60% market share. And इतना ज्यादा market share है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा market share होता है उस business को कहते हैं market leader. I can say that in this industry, in this education resource industry, EM is basically the market leader, and GR is currently a new startup with a 3% of market share. And refer to table 1.1, calculate GR's market share by revenue. Calculate GR's market share by revenue. ज़ाहिर है यहाँ पे अगर वर्किंग किए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. मुझे अपनी आंसर शीट में प्रॉपर वर्किंग्स शो करने आने चाहिए है. मार्केट शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? सेल ऑफ अ बिजनेस divided by total market sales multiplied by 100. So sales हैं $15,000 divided by market sales and $500,000 multiplied by 100. So this gives market share of GR.
ठीक है, प्रॉपर देखो वर्किंग्स फॉर्मूला सब कुछ किया है, क्योंकि फॉर्मूला भी लिख दो अच्छी बात है। ठीक है भाई। और फॉर्मूला वर्ड टू वर्ड जरूरी नहीं है कि हम सेम वर्ड टू वर्ड लिखें। कॉन्सेप्ट अगर आता है और वर्ड्स आगे पीछे भी हो जाते हैं तो मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, बी पार्ट वन हो गया, बी पार्ट टू की बारी। बी पार्ट टू क्या कह रहा है देखो। Explain one factor which may influence the supply of GR's products. Explain one factor which may influence the supply of GR's products. सप्लाई, क्या चीज हम बेचते हैं? GR, हम एजुकेशनल रिसोर्सेज बेचते हैं और हमारी वेबसाइट है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच कुड अफेक्ट द सप्लाई ऑफ GR's प्रोडक्ट्स? सप्लाई कैसे अफेक्ट हो सकती है बताओ। वैसे तो सप्लाई के बहुत सारे फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, लेकिन इस सिचुएशन में व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द सप्लाई ऑफ GR's प्रोडक्ट्स? ये जो एजुकेशनल रिसोर्सेज बेचते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एजुकेशनल रिसोर्सेज की सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं? बताओ भाई। लैक ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज, यस हो सकता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज का मसला होगा, कि अगर रिसोर्सेज शॉर्ट हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज आपको इतनी आसानी से नहीं मिल रहे हैं, तो फिर उससे बड़ा फर्क पड़ेगा सप्लाई के ऊपर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, गुड। और प्राइस ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्राइस ऑफ सब्सक्रिप्शन से सप्लाई नहीं, डिमांड अफेक्ट होगी ना प्राइस से तो। हाँ। और बताओ, और कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सप्लाई अफेक्ट हो सकती है? मैं बताऊं एक और, कंपटीशन हो सकता है शायद। कंपटीशन, या जैसे इन चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इज द राइट थिंग टू से। यस, टेक्नोलॉजी चेंजेस, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपग्रेड होती है, कोई एआई इंट्रोड्यूस होता है या अपग्रेडेशन आते हैं, तो हो सकता है एजुकेशनल रिसोर्सेज के फिर सब्सटीट्यूट्स बनना शुरू हो सकते हैं। द मोर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, द प्रॉब्ली new sources would become available, new options for the customers would become available, and this can actually affect the supply of educational resources. कैसा अच्छा सवाल है, मुश्किल सवाल है वैसे, आसान नहीं है जो बात है, मतलब एग्जाम सिचुएशंस के रिलेटेड अच्छा सवाल है। वन ऑफ द फैक्टर्स, one of the factors which can influence the supply of educational resources, one of the factors which can influence the supply of educational resources is the availability of skilled employees. Is the availability of skilled employees. Developing educational resources. Developing educational resources is a skillful job which will need developing educational resources is a skillful job which will need highly trained and professional employees. And professional employees. And if there is a shortage of skilled workers, if there is a shortage of skilled workers, then the supply
of educational resources and the supply of educational resources sold by GR on its website can reduce. Can reduce. One of the factors which can influence the supply of educational resources is the availability of skilled employees. Developing educational resources is a skillful job which will need highly trained and professional employees. And if there is a shortage of skilled workers, then the supply of educational resources sold by GR on its website can reduce. क्योंकि अगर आपका employees नहीं होंगे तो शायद फिर supply भी आपकी affect होगी definitely. Copy this down.